students, in the previous video we started our chapter that is cell, the unit of life, and we discussed about the different types, shapes of cells, and then we discussed about the prokaryotic cell. In the prokaryotic cell, I told you about two types of bacteria that are the gram positive bacteria और gram negative bacteria. जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे वहां पे मैंने आपको एक बात बताई थी कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन बैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज ग्राम पॉजिटिव and gram negative bacteria. So today we will discuss about what are these, how we differentiate the bacteria in these two categories. What are the gram positive and gram negative bacteria? This naming means the gram positive and gram negative bacteria. This naming is done on the basis of staining properties. You know, one scientist names Hans Christian Gram. He developed a staining technique. आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप में विजुअलाइज करना होता है तो हमें पहले उनको स्टेन करना पड़ता है ताकि वो इजीली वो कलर के अकॉर्डिंग हमें दिखाई दे। उस जो स्टेनिंग हम यूज कर रहे हैं, जो स्टेन में हम जो कलर दे रहे हैं, उसकी वजह से माइक्रोस्कोप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से विजुअलाइज हो जाता है। तो इसी तरीके की एक स्टेनिंग मेथड के बेसिस पे बैक्टीरिया की टू कैटेगरी बनाई गई है एंड दैट स्टेनिंग मेथड वाज प्रपोज्ड बाय द साइंटिस्ट नेम्ड हैंस क्रिस्टियन ग्राम। हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने एक स्टेनिंग प्रॉपर्टी दी थी। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द स्टेनिंग मेथड। इस मेथड में हम करते क्या है, देन वी विल मूव ऑन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। In this method, this gram staining method, this method is known as gram staining method. In gram staining method, we use a stain that is crystal violet. We use a stain that is crystal violet stain. हैंस क्रिस्टियन ग्राम जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो स्टेनिंग मेथड बनाया जिसे ग्राम स्टेनिंग कहते हैं, उसके अंदर स्टेन यूज किया गया दैट वाज अ क्रिस्टल वायलेट स्टेन. What happened when Hans Christian Gram stained the bacteria with this stain? उन्होंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप कि इस क्रिस्टल वॉयलेट से बैक्टीरिया को स्टेन किया. जब क्रिस्टल वॉयलेट से बैक्टीरिया को स्टेन किया गया, बैक्टीरिया लुक्ड पर्पल. बैक्टीरिया का जो कलर था ना वो पर्पल नजर आने लगा. इसमें एक स्टेप बीच में आप आयोडीन का भी ऐड कर सकते हैं. वी कैन यूज द आयोडीन स्टेन आल्सो सो दैट इट कैन मेक मोर प्रोमिनेंट, ताकि बहुत अच्छे से कलर शो हो जाए. हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन यूज किया था. बैक्टीरिया को स्टेन किया गया स्टेन से, जिसकी वजह से बैक्टीरिया का कलर पर्पल नजर आया. उसके बाद इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट क्रिटिकल स्टेप फॉलो किया गया, दैट वाज द वॉशिंग विद अल्कोहल. इस स्टेनिंग के बाद जो बैक्टीरिया, जो स्टेन बैक्टीरिया थे, उन्हें अल्कोहल से वॉश किया गया. जब अल्कोहल से वॉश किया गया तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिली कि सम बैक्टीरियाज हैड शोन द पर्पल कलर. कुछ बैक्टीरिया ने अपना पर्पल कलर रिटेन किया, लाइक दे रिमेन एज अ पर्पल कलर. उनका पर्पल कलर रहा, जबकि सम बैक्टीरियाज लूज देयर पर्पल कलर. क्रिस्टल वॉयलेट की वजह से उनका कलर पर्पल हो गया था, बट जब अल्कोहल से वॉश किया गया, सम बैक्टीरिया रिटेन देयर पर्पल कलर. उनका पर्पल कलर एज इट इज रहा, but some bacteria lose their purple color. ये जो बैक्टीरिया थे जिनके अंदर कलर प्रेजेंट रहा, पर्पल कलर प्रेजेंट रहा, these bacteria were known as gram positive bacteria. जो पर्पल कलर को रिटेन रखते हैं वो कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. उसके बाद इस तरीके के बैक्टीरिया को सैफ्रेनिन से स्टेन किया गया. सैफ्रेनिन इज अनदर स्टेन व्हिच इज यूज्ड फॉर स्टेनिंग प्रॉपर्टी. इन स्टेन सैफ्रेनिन से स्टेन किया गया. जब इन बैक्टीरिया को सैफ्रेनिन से स्टेन किया गया, then they retain pink color. इनके अंदर शो हुआ पिंक कलर. So on the basis of these two staining properties, one bacteria shows the purple color of crystal violet stain and another bacteria shows the color of safranin. It do not show the color of crystal violet. इस बेसिस पे बैक्टीरिया की टू कैटेगरी बनाई गई, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. अब ये क्यों हुआ, हम इसके बारे में बात करते हैं. Why the bacteria shows these two types of categories? What happened in the structure of prokaryotic cell? We discussed that prokaryotic cells have plasma membrane. Prokaryotic cell में plasma membrane होती है, and outside the plasma membrane they have one more layer that is cell wall. Outside this plasma membrane they have one more layer that is cell wall. So in the case of gram positive bacteria they have cell wall, they have plasma membrane. दोनों चीजें होती हैं.
इसी तरीके से हम दूसरे टाइप की बैक्टीरिया की भी बात करते हैं. We are discussing the structure of both gram positive and gram negative. Plasma membrane, innermost layer. This one is the plasma membrane. And outside this plasma membrane, this is cell wall. बाहर की तरफ हमने बनाया cell wall. Same in this type of bacteria also plasma membrane, and outside the plasma membranes is the cell wall. So this is also cell wall. The bacteria in which the cell wall is thick. The bacteria in which the cell wall is thick, and this cell wall we already discussed is made up of peptidoglycan. Cell wall made up of दोनों ही तरीके के अंदर cell wall जो है वो peptidoglycan की बनी हुई है. Cell wall is made up of peptidoglycan in bacteria. So cell wall is made up of peptidoglycan, but in the case of these bacteria, cell wall is thick. इन बैक्टीरिया में सेल वॉल थिक है, जबकि दूसरे बैक्टीरिया जो है इनके अंदर सेल वॉल जो है वो थिन है. ये बैक्टीरिया जिनके अंदर सेल वॉल थिक होती है, these bacteria are known as gram positive bacteria. इन्हें हम बोलेंगे gram positive bacteria. And these bacteria which have thin cell wall of peptidoglycan, they are known as gram negative bacteria. So this is the one difference between both type of bacteria. Gram positive bacteria में cell wall thick होगा, जबकि gram negative bacteria में cell wall जो है वो thin होगा. बना दोनों के अंदर ही peptidoglycan का है. सेकेंड थिंग, यहाँ पे एक कॉम्पोजिशन हम सेल थिकनेस को लेके देख लेते हैं कि कितना है. ये जो थिक सेल वॉल है, यहाँ पे सेल वॉल का जो साइज होता है वो होता है 20 to 80 नैनोमीटर. The size of cell wall in gram positive bacteria is 20 to 80 nanometer. But in the case of gram negative bacteria, the size of cell wall is, or thickness of the cell wall is just 8 to 12 nanometer. So it's very different from each other कि इसमें बहुत ज्यादा thickness है, इसमें बहुत कम thickness है. One more difference we will talk here, discuss here. Second, one about the cell wall. Second, here one important component is also present in the cell wall of gram positive bacteria. Gram positive bacteria के अंदर टिकोइक एसिड एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसे बोला जाता है टिकोइक एसिड. दिस टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट. टिकोइक एसिड is present in gram positive bacteria. These are the gram positive bacteria. In the case of gram positive bacteria, their cell wall contain teichoic acid. But in the case of these gram negative bacteria, teichoic acid is absent. They do not contain teichoic acid in their cell wall. So teichoic acid only present in the cell wall of gram positive bacteria. One more important thing is to be discussed here. In these gram positive negative bacteria outside the cell wall, they have one more layer. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल के बाहर की तरफ एक और लेयर प्रेजेंट होती है, एंड दैट लेयर इज मेड अप ऑफ lipopolysaccharides or proteinaceous. It's lipopolysaccharide and proteinaceous nature layer. Means they have one more outer layer outside the cell wall. Cell wall is thin and it do not contain teichoic acid, and outside the cell wall they have one more layer, and this layer is made up of lipopolysaccharide and protein. इसमें lipopolysaccarides होंगे, proteins होंगे, इसकी बनी हुई एक और layer present है outside this thin cell wall membrane which lack teichoic acid also. On the basis of these characteristics which we discussed, the thickness of the cell wall, the presence of teichoic acid, and the extra layer that is present outside the cell wall, these bacteria shows this type of properties. Let's see how it happens. When we stain these bacteria, जब हमने दोनों तरीके के बैक्टीरिया लिए and we stained them with the gram staining method, हमने ये मेथड फॉलो करते हुए इन बैक्टीरिया को स्टेन करना शुरू किया. When we use the crystal violet stain, जैसे आप crystal violet stain देते हो, crystal violet stain देने पे इनकी सेल वॉल जो है, सेल वॉल में क्रिस्टल वॉयलेट कलर एक्वायर कर लेंगे, बट यहाँ पे सेल वॉल जो है वो एक्सपोज्ड सेल वॉल है, मींस देयर इज नथिंग आउटसाइड दिस सेल वॉल, सो इट कैन प्रॉपर्ली इट कैन टेक द क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन. तो यहाँ पे इन बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल क्रिस्टल वॉयलेट का स्टेन बहुत अच्छे से ले पाएगी. बट इन द केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दे हैव वन मोर एक्स्ट्रा लेयर आउटसाइड द सेल वॉल, सो दे डू नॉट एबल टू टेक द कलर ऑफ क्रिस्टल वॉयलेट. When we means it will take, but it not take properly. It just it is some part of the cell wall take because it has lipopolysaccharide and protein layer.
So in gram-positive bacteria, the cell wall take the stain of crystal violet properly. When we wash them with acetone or alcohol, जब हम इन्हें acetone और alcohol से wash करते हैं, in that condition, after washing with alcohol or acetone, these gram-positive bacteria retain the color of crystal violet because their cell wall acquired the color properly. इनके अंदर इन बैक्टीरिया के अंदर जो crystal violet का कलर था वो इन सेल वॉल के अंदर बहुत अच्छे से रिटेन हो गया था. They are able to retain, अच्छे से इन सेल वॉल के अंदर चला गया था. और जब एसीटोन से या अल्कोहल से वॉश किया, they are not able to lose the color, so they shows the purple color, and that's why they are called as gram positive bacteria. But in the case of gram negative bacteria, their cell wall is thin, cell wall thin है, and outside this cell wall they have extra layer that is lipopolysaccharide or protein layer. When we stain them with crystal violet से जब इसे stain कर रहे हैं, वो stain properly cell wall तक नहीं पहुंचता. It just retain inside, outside this layer, that lipoprotein layer. And when we wash these cell or we wash these bacteria with acetone or alcohol, this lipoprotein or polysaccharide and protein layer lose the color. It's lose the color of crystal violets. So they do not looks purple. और ये purple नजर नहीं आते. After that, when we color them with safranin, next step is when we color or stain them with safranin. जब हम इन्हें safranin से stain करते हैं, these bacteria are already stained with crystal violet. ये crystal violet से stain होते हैं, तो that's why they are not able to take the color of safranin. ये safranin का color नहीं लेंगे, and they just looks purple. But these bacteria who lose the stain of crystal violet, now they take the color of safranin, that is pink color. That's why they look pink. So this is the main difference because of their cell wall thickness, cell wall composition, and one extra layer that is present outside their cell wall. On the basis of these methods, these techniques, these bacteria are divided into two categories: gram positive bacteria and gram negative bacteria. The gram negative bacteria, which have extra polysaccharide and protein layer, this layer provide them some special characteristics. Due to the presence of this layer, इनके अंदर एक extra चीज है, ये जो layer इनको present होती है, this layer protect them against antibiotics. It provide them some antibiotic resistance. So these type of bacteria are virulent bacteria. Means all of the, like most of the gram negative bacteria are the pathogenic bacteria, जो कि disease causing bacteria होते हैं. Bacteria दोनों तरीके के हो सकते हैं, harmful bacteria भी होते हैं, useful bacteria भी होते हैं. But most of the bacteria which are harmful bacteria, they come from this category, that is gram negative bacteria. So they are known as virulent bacteria or disease causing bacteria. So here we discussed about two types of bacteria: gram positive bacteria and gram negative bacteria. Now these names are given on the basis of staining properties discovered by scientist Hans Christian Gram, and these are the characteristics on the basis of they show this type of staining property. So this is very important topic according to your NEET exam as well as your CBSE board exam. So keep studying it. After that, we will study about eukaryotic cell. Up to now, we discussed about the prokaryotic cell structure. Now we will start, or we will move further with our next topic, that is eukaryotic cell structure, in which we will take two examples: plant cell and animal cell. So keep watching, keep studying, and keep learning. Thank you.